हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीड अकेडमी। तो हम लोग आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के ऊपर जीरो अपॉन जीरो एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को हमने कर लिया था और उसके ऊपर एक्सरसाइज भी कर ली थी। उसमें दो प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11। तो उसको जो आंसर था वो आपकी टेक्स्ट बुक के जो आंसर शीट था उससे मैच नहीं कर रहा था, तो उसको हमने रीचेक करा था। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमने जो सोल्यूशन दिया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो जो आंसर आपके आंसर शीट में दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। और हमको क्वेश्चन नंबर 16 और बताना था एक्सरसाइज का, तो लेट अस डू कि क्वेश्चन नंबर 16 को हम कैसे करेंगे, एंड देन फिर हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म की बात करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 16 समझाना था, तो टाइम ज्यादा लग रहा था लास्ट लेक्चर में, इस वजह से हमने यहाँ पर इस लेक्चर में हम इसे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम योर एक्सरसाइज। So they are given if this limit x tending to 0, sine 2x plus a sine x divided by x cube, okay, be finite. This limit is finite. Okay, so what they asking? They asking what, find the value of, find the value of a, a की आपकी वैल्यू निकालनी है, एंड द लिमिट, और आपकी लिमिट निकालनी। तो जब आपको ए कैलकुलेट हो जाएगा तो लिमिट भी आपकी इजिली कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर यही उठता है कि हाउ वी कैलकुलेट ए, है ना, ए को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो यहाँ पर फाइनाइट टर्म दिया हुआ है कि लिमिट इज फाइनाइट, इस टर्म का हम यूज करेंगे। लेट अस सी की कैसे हम यूज करते हैं, तो लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन। So when you are going to find the limit x tending to 0, sin 2x plus का a sin x divided by x cube. So you know that when you put x is equals to 0, sin 0 is 0, and it means that you will get 0 upon 0 form. So this is nothing, this is 0 upon 0 form. So you can apply easily DL hospital rule. तो आइए अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हम डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, एंड जो हमारे पास 2x है उसका 2 बाहर आ जाएगा, एंड प्लस का दिस इज योर a एंड साइन का cos x डेरिवेटिव, एंड डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। ओके, सो कैसे हमने करा, बाई बाई द रूल, डी एल हॉस्पिटल रूल। दिस इज बाई डी एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अब देखिएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, दिस इज 2 cos 2x, ओके, एंड दिस इज योर a of cos x, तो 3x स्क्वायर। ओके, तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास when x is tending, this will be tending to when x is tending to 0, the numerator will be tending to what? When you putting x is equals to 0, this cos 0 is 1, and this cos 0 is 1, it means this will be 2 plus a, and the denominator later will be tending to 0. ठीक, so if you get, if this is non-zero somehow, if it is this non-zero and upon में क्या है हमारे पास 0, तो this whole thing will be tending to infinity। ठीक, which contradicts क्या गिवन है कि लिमिट हमारे पास क्या है, फाइनाइट। इट मीन्स दैट
फॉर द फाइनाइट लिमिट दिस 2 + a शुड बी इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं कि चीज, कि हमारे पास जब हम न्यूमरेटर को निकाल रहे हैं तो 2 + a आ रहा है, जब डिन्यूमरेटर की बात कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो इफ दिस इज नॉन जीरो नंबर, इफ समथिंग नॉन जीरो डिवाइडेड बाई 0, तो दिस विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, विच कंट्राडिक्ट्स आवर रिजल्ट। है ना, रिजल्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास फाइनाइट लिमिट है, इसका मतलब है 2 + a को 0 होना ही पड़ेगा, इट शुड बी 0। So since limit is finite, so this implies 2 + a should be equal to 0. This implies a is just equal to minus of 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास -2 आ गया। अब इसका हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, सो नाउ, so this limit now put, you can just say, now put a is just equal to -2. Okay, so what you got from here, this will be becomes the limit, this is limit x tending to 0, and this is 2 cos 2x, and this is minus of 2। okay? The a equals to -2 है, तो this will be minus of 2 cos of x divided by 3x square, 3x square। ओके, सो नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0। और अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 2 cos 2x -2 cos x में हम x बराबर 0 पुट करते हैं, तो यू विल गेट अगेन 0 फॉर 0 फॉर्म। तो हम यहाँ पर डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी कॉस का होता है माइनस का साइन 2x, तो इट विल बी 2 2 टू जा 4, इट मींस इट विल बी -4 ऑफ साइन 2x। ओके, बिकॉज कॉस का डेरिवेटिव आपका माइनस साइन 2x, कॉस 2x का, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 टू जा 4 हो गया। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, दिस इज माइनस प्लस ऑफ 2 कॉस का हमारे पास साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, दैट वाई वी टेक दिस प्लस। यहाँ पर 3 टू जा 6 ऑफ एक्स। ओके, बाई हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं again, if you apply again the limit x is equals to 0, you will get again 0.0 form, है ना, it remains the 0.0 form। okay, so we can again apply the limit DL hospital rule, limit x tending to 0 and taking the derivative, sin का derivative होता है cos, so it will be minus of 8 cos 2x, and this will be plus of 2 cos x, and this is divided by 6। okay, by the same DL hospital rule। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो विल गेट माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 6, एंड दैट इज इक्वल्स टू -6/6, एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। तो इट मींस लिमिट of the given function at x tending to 0 is just equal to -1, and the value of a is just equal to -2। ओके, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को करते हैं जो हमारे पास है। तो हमें ये देखना है कि वो फाइनाइट लिमिट्स को दे रहा था, इसलिए हमें जो न्यूमरेटर है उसको 0 करना ही पड़ता है, क्योंकि डी न्यूमरेटर में 0 गिवन है। ओके, आइए नेक्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ऑफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो अभी हमने दो फॉर्म्स पढ़ी, एक 0/0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये भी हमारे पास, क्योंकि अगर इन्फिनिटी से हम इन्फिनिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, वी कैन नॉट डिटरमिन।
तो इसलिए इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, indeterminate form, indeterminate form, that is your infinity minus infinity. Okay, you can say. So what you get from here? So in case अब हमको जो एल हॉस्पिटल रूल हम लगाते हैं वो स्पेशली 0/0 एंड इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में लगाते हैं। तो अगर हमारे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है तो हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी और 0/0 फॉर्म में, ताकि हम अपना एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सके, डी एल हॉस्पिटल रूल को। ओके, so we will you can say in such cases it is evaluated by changing into the form 0/0 or infinity upon infinity. You can just write this language. In such cases, it is evaluated by changing it into form that is your 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। देखें कैसे हम करते हैं, इस फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो लेट अस सी। तो let us, we have two functions fx and gx, and limit of fx is infinity and limit of gx is also infinity. So we will get infinity minus infinity form. So we have just take two limits of two functions. Suppose we have limit of a function fx when x is tending to a is just equal to infinity, and this is limit of x tending to a of gx is just equal to infinity. Then what will be the limit? Then if you are going to find the limit, then limit of x tending to a of fx minus gx will be give our infinity minus infinity form. Okay, so how we calculate it? So if it is an infinity form, if it is also infinity form, so you can write in this way. This is a limit x tending to a, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, this is 1/1/fx, okay, and minus this is 1/1/gx. You can write in this way because 1/1 this affects again, and this is 1/1 gx will be get again gx. Okay, so in this way you can write here. Okay, now what we are going to do, so just we take the LCM of 1/fx into 1/1. So if you are going to take the LCM, this is limit x tending to a, and you have here 1/fx. You have 1/gx. I'm multiplying whole thing. I'm taking this in this cell. I'm taking this is as in denominator and taking the LCM. It means taking the product of this, and this will be multiplied this one, and this 1/fx will be multiplied to this one. So this is 1/gx minus 1/fx divided by 1/fx into gx. You will get this in this way. So you can see now, you know that key when x tending to a, gx tending to infinity, and this effect will be tending to infinity, and this effect and gx is tending to infinity. So this if numerator is tending to infinity, denominator is tending to infinity, then whole fraction will be tending to 0.
So it means this will be tending to 0, this will be tending to 0, and this is also tending to 0. So what you get? You get now it is a 0.0 form. So now it is a 0.0 form. Okay. So now it is a 0.0 form. So now you can apply the rule, your DL hospital rule. Okay. You can easily now apply. So what we are doing, we did just 1 upon fx, 1 upon gx minus 1 upon fx upon 1 upon fx equals g. So we will change any of the limit accordingly in a 0 upon 0 or infinity upon infinity form by changing, taking the reciprocal or multiplying each other in such a way. Okay. So we can say this limit is a form. So this is, if you are taking this equation number 1, you can say simply, you can say we observed that the right hand limit of 1 is of the form 0.3. Okay, clear? तो 0.0 फॉर्म. तो आइए इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं. तो लेट अस सी. एक एग्जांपल है हमारे पास. एग्जांपल क्या है? दे आर आस्किंग फॉर evaluate this limit x tending to 0, 1 upon x square minus 1 upon sine square x. So here you can see this x is tending to 0, then 1 upon x square will be tending to infinity, and 1 upon sine square x will be also tending to infinity. So this is clear, it is a infinity minus infinity form. Okay, so what we'll do, let's we convert in the 0.0 form or infinity upon infinity form first. So I'm just taking the LCM x tending to 0. I am taking the LCM, so it will remain, this is sine square x minus of x square divided by x square into sine square x. So you can clearly see कि now it is a 0.0 form, है ना? अभी ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म था. नाउ हमारे पास न्यूमरेटर में भी 0 आएगा और डिन्यूमरेटर में भी 0 आएगा. तो नाउ इट इज 0.0 फॉर्म. So now we can apply the DL hospital rule easily. This is limit x tending to 0. When you are taking the derivative, it will be 2 of sine x, and sine का होता है cos of x. Okay, and this is minus of 2a divided by numerator में x square, and taking the derivative of sine square x, it will be 2 of sine x into cos x, and this is plus of x. This is sine square of x into 2x into 2x, taking the derivative of x square. So by, you can just say by DL hospital rule. Okay, so what we will get from here, this is limit x tending to 0, and this will be sine of 2x and minus of 2x divided by, this is x square sine of 2x, and plus of this is 2 times x of sine square of x. Okay, so this is again a 0.0 form. तो अगर 0.0 फॉर्म है तो हम इसको फर्दर क्या करते हैं, फर्दर हम लोग इसको डेरिवेटिव लेते हैं. तो दिस इज अप्लाई द डीएल हॉस्पिटल रूल. तो यहाँ पर साइन 2x का डेरिवेटिव, दिस इज 2 टाइम्स कॉज ऑफ 2x. ओके, एंड दिस इज माइनस ऑफ डिवाइडेड बाई अगेन एक्स स्क्वायर. तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर, और साइन का क्या हो जाएगा, दिस विल बी
to cos 2x into 2 and plus sin 2x into 2x x square का 2x हो जाएगा प्लस का this is 2 times I'm taking the derivative of x is 1 so it will be sin square of x and plus this is your x into 2 sin x into cos x. So I'm just writing the derivative of the function by the chain rule. So it is not by the DL hospital rule. I just took the derivative. So what is this? This is limit x tending to 0. So this is 2 cos of 2x. Okay, that is okay. Minus 2 divided by this is 2x square and this is cos of 2x. ये हमारे पास एक आया प्लस दिस इज 2 of x sin of 2x ये हमारे पास है and in the third term plus of 2 of sin square of x ये हमारे पास है and plus 2 to the 4 this is 4 of x don't take x so you will have what so this is 2x sin square x and this will be plus of 2 to the 4 so I'm just not multiplying 2 it will be sine of 2x okay so this is again 0.0 form so we can again take the derivative of such cases so if you are taking the derivative this will be remains this will be 2 times 2 to the 4 which is 2 of minus of sine 2x okay divided by इसका हम करते हैं दिस इज 2 of x square and this is the minus of sine of 2x into 2 है ना फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का रूल लग जाएगा प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिवेटिव एंड प्लस तुम्हारे पास हो जाएगा दिस इज cos 2x into 2x ये हो गया हमारे पास एंड प्लस this is 2 this is x this is cos of 2x into 2 प्लस का sin 2x बिकॉज x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा ये हो गया प्लस का दिस इज 2 into 2 sin x into cos x ओके प्लस प्लस तुम्हारे पास हो जाएगा 2 इसका हम करते हैं तो 2 दिस इज योर x cos 2x into 2 and this is plus sin of 2 okay so this is somehow some lengthy process but we will have to do है ना हमको करना पड़ेगा so this is limit x tending to 0 और this is 2 to the 4 तो माइनस का 4 अब sin 2x ओके आइए जरा डिन्यूमरेटर को देख लेते हैं क्या आएगा तो here 2 to the 4 so this will be minus of 4x square sin of 2x ये हो गया and this is also 2 to the 4 so this is 4 of x cos 2x okay and this is plus of this is 2 to the 4 of x 4 of x 4 of x 2 to the 4 of x cos 2x okay and plus of 2 sin 2x okay and next plus का 4 2 to the यहाँ पर आप 2 sin 2x यहाँ पर भी लिख सकते हैं दिस इज 2 times sin 2x and plus of 2 to the 4 x cos 2x and plus of 2 sin 2x ओके सो ये हमारे पास एक्सपेंड होके आया लेट अस सिंप्लीफाई इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस इज -4 of sin 2x ओके डिवाइडेड बाई ध्यान दीजिएगा सो दिस इज सिंगल टर्म x स्क्वायर sin 2x कोई दूसरा टर्म ऐसा नहीं है
बट 4x cos 2x यहाँ पर है, 4x cos 2x यहाँ पर है, 4x cos 2x यहाँ पर है, तो 4 3 12, तो इट विल बी +12 ऑफ x cos 2x हो गया, एंड प्लस ऑफ 2 sin 2x, 2 sin 2x, 2 sin 2x, इट विल बी 6 sin 2x। ओके, तो अभी भी हम देखें अगर, तो इसमें x है, इस वाले टर्म में x है, इसमें साइन है, इसमें, तो ये अगेन 0.0 फॉर्म आ रहा है ना, दिस इज अगेन अ 0.0 फॉर्म। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, और फिर से हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा -4 4 टू 8 है ना, क्योंकि 2 वहां से निकलेगा, तो इट विल बी 4 टू 8, बस, बट माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का 8, और साइन का हो जाएगा कॉस, तो इट विल बी cos 2, ओके, डिवाइडेड बाई, आइए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो दिस विल बी -4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉस ऑफ 2x into 2, एंड प्लस दिस इज योर साइन ऑफ 2x into 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एंड दिस इज +12x cos 2x, में हम 12 को बाहर ले लेते हैं, और फिर से x, और cos 2x का हो जाएगा माइनस का sin 2x into 2, ओके, एंड प्लस x का हो जाएगा, तो ये cos 2x बचेगा, ओके, दैट इज ओके, प्लस हमारे पास 6 into 2 cos 2x, ये हमारे पास बचा। आइए अब जरा लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, इट मींस वी विल गेट -8 हेयर, और बाकी डिन्यूमरेटर में हमारे पास नॉन जीरो नंबर टर्म मिल जाएगा, तो यू विल गेट अ लिमिट हेयर व्हेन यू आर अप्लाइंग एक्सटेंडिंग टू 0। तो आइए रख देते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है। तो हम न्यूमरेटर में रखेंगे, तो यू विल गेट -8, एंड डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, बिकॉज हियर x इज प्रेजेंट एंड हियर आल्सो x इज प्रेजेंट, इट इज 0, यहाँ पर x प्रेजेंट है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बट cos 2x मतलब cos 0 की वैल्यू 1, तो दिस विल बी अपॉन में 12, एंड प्लस दिस इज आल्सो 6 to the 12, तो इट विल बी 12, so from here you will get -8 upon 24, so you will 8 3 is 24, so it will be -1/3, this is your answer। ओके, तो दिस इज योर आंसर, इट विल बी -1/3। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि हमको कितनी बार डी एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ा, व्हेन वी आर ऑल टाइम वी आर गेटिंग 0.0 फॉर्म आफ्टर कन्वर्टिंग इट इन द 0.0 फॉर्म। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और इसको देख पाते, तो हम थोड़ा सा और इसको इजी कर पाते, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो अगर हम इसको सिंगल उसमें कन्वर्ट कर ले, तो इट विल बी फॉर्म्स इजी। तो लेट अस सी हाउ, इसको थोड़ा सा और ट्रिक या शार्ट ट्रिक कह सकते हैं, उस फॉर्म में अगर हमें दिख जाए कोई चीज, तो वी कैन अप्लाई, ठीक है। तो हम जस्ट, यू कैन हैव सेकेंड मेथड, हम जो ये कैलकुलेशन है बहुत सारी वो करने से बच जाएंगे, तो हम अगर थोड़ा सा इसको देख पाए, जैसा कि हमने देखा था कि दिस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लिमिट x टेंडिंग टू 0, और वी आर फाइंडिंग 1/x² -1/sin² ऑफ x, ओके। व्हेन यू आर टेकिंग द LCM, limit x tending to 0, it will be sin square of x minus x square divided by x square into sin of square of x। हम एक चीज जानते हैं ऑलरेडी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन x अपॉन x का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले थोड़ा सा, हम देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हमारे पास ठीक है, न्यूमरेटर दैट इज ओके, -x² डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम x² से मल्टीप्लाई करें और x² से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर x² into x² विल बी x⁴
you will get sin square x upon x square in this way you can write. एंड अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम सेपरेटली भी लिमिट लिख सकते हैं. दिस लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, we will be have sin square x sin square x minus x square divided by this is x for 4, okay, into 1 upon this is limit x tending to 0, this is sin x upon x इसका होल स्क्वायर. ओके, सो ये लिमिट हमारे 1 होती है तो we simply say this equal to 1, so this is 1 square, it means 1. तो अब हमारे पास जो लिमिट, जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो लिमिट बची जो कि हमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है वो हमारे पास ये बचा. अब इजीली डिन्यूमरेटर में हम आसानी से चीजों को कर पाएंगे. ओके, तो दिस इज नाउ इट रिमेन 0.0 फॉर्म और हम यहाँ पर आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं. ठीक है, तो आइए 1 by 1 लगाते हैं. तो सिंपली लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो साइन का हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x एंड माइनस का 2x, ओके, डिवाइडेड बाई 4x क्यूब. So this is again 0.0 form. Okay, if you are going to simplify it, this is limit x tending to 0 and this is your sine of 2x and minus 2 of x divided by 4x cube. फिर again 0.0 form, फिर से हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं. तो you will get what, this is limit x tending to 0 और साइन का हो जाएगा this is 2 times cos of 2x minus का 2 divided by 4 3 is 12 of x square. This is again 0.0 form because when you put x equals to 0, cos 0 is 1, this 2 minus 2 is 0 and numerator में तो x for denominator में x present ही है तो you will get 0 in denominator as well. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर फिर से हम इसको डेरिवेटिव करते हैं तो दिस विल बी माइनस 2 टू जब 4, दिस इज साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई दिस इज 24 ऑफ x. इट इज अगेन 0.0 फॉर्म. फिर से हमने अप्लाई करा डीएल हॉस्पिटल रूल. दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस इज माइनस ऑफ 4 टू द 8 cos of 2x and divided by this is 24 by DL hospital rule. Okay, and then if you are applying the limit you will get minus 8 in numerator and this is 24, it will get minus 1 by 3. So जो हमने प्रीवियस मेथड करा इसी को सॉल्व करने का वो एक ट्रेडिशनल, मतलब हम 1 by 1 उसको डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है. अगर ऑब्जर्वेशन से हमें कोई चीज मिल जा रही है तो हम उस ट्रिक का यूज करें और उसे थोड़ा सा शार्ट बना लें ताकि हमारा लेंथी प्रोसेस ना हो. तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो सेकंड आपका मेथड है उस तरीके से प्रॉब्लम दी है. हमने उसको फर्स्ट वाला मेथड इसलिए करा ताकि हम लोग उस अवेयर हो कि सोल्यूशन वैसे भी निकलता है. तो आपको अगर नहीं किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, अगर वहां पर ऑब्जर्व करके चीजें हो जा रही हैं दैट इज ओके. Otherwise, you can follow your methodology. You can able to find the limit and solve the problem. Able to solve the problem. Okay. So it was the form infinity minus infinity. Okay. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 0 into infinity और अदर जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द एक्सरसाइज. ओके, तो होप सो कि समझ आया होगा और किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर 0 के फॉर्म में, है ना. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल. और आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दिया करिए.